आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। Our team interviewed several religious minorities in Pakistan, conducted surveys for minorities abroad, did extensive secondary research, and visited an NGO to shed light upon the treatment of religious minorities. ऑल मिनॉरिटीज़ को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ कि उनकी बहुत सी जो वर्शिप प्लेसेस है लाइक चर्चेज हैं, मंदिर हैं, उन सब में जाते वक्त उनकी फीमेल्स को हरास किया जाता है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी, ये चीज़ हुई है आइला की जॉब काउंसलिंग हो और स्कूलिंग में बच्चों के साथ बिहेवियर हो या फिर किसी केस करप्ट में किसी हिंदू का हो तो उनको माइनॉरिटी में रख के दबाया जाता है। यस, मोस्ट ऑफ टाइम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे आपके इंटेंसिफाई भी करते हैं। अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ में बैठे होते हैं तो इस चीज़ को कहते भी हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि मिनॉरिटीज़ या स्पेशली क्रिश्चियनिटी कैसे इतना आगे आ सकती है, आप एजुकेशन में इतना कैसे आगे जा सकते हैं, आप पढ़ने में, आप ऑफिशियली ऐसे कैसा, मतलब आपके लिए तो ये सब है ही नहीं है। यहाँ पे तो नहीं होती, सिंध में होती है, इंटीरियर सिंध में होती है लोगों के साथ। मतलब किस तरह की लड़कियों के साथ भी जाती होती है और उनको मतलब जानबूझ उनको मुस्लिम करके उनके साथ शादी कर लेते हैं। We conducted a survey to investigate the treatment of religious minorities abroad. Most of the people we surveyed were Muslim who lived in countries where Islam is a minority. As visible, we surveyed people from several different countries, and a large portion of people felt alienated by society at some point in time, and some felt discriminated against on the basis of their religion. A small amount of people expressed that they had been verbally abused, while 1 or 2 people also said that they had been physically abused. क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज प्रेस मिनॉरिटी, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंसिफाई किया जाता है, एग्रीवेट किया जाता है कि ये जो है ये मिनॉरिटी है तो इनको अगर राइट्स नहीं भी दिए जाएंगे तो इट्स ओके। मैं तो कहूँगा कि सब तो बेहतर क्वेश्चन ये भी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ 5% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5% ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। झूठियाँ खबरां, झूठियाँ गल्लां सुन के हमारे जो सिंध में जहाँ भी जाती होती लोगों के साथ, वहाँ पे उसका जो है थोड़ा ख्याल किया जाए। छोटा सा किस्सा है, बच्चों का किस्सा है पर इतना कोई खास नहीं है। स्कूलिंग होल्डिंग और पोजीशन होल्डिंग फंक्शंस में अगर हिंदूज की ज़्यादा पोजीशन है तो वो एनुअल फंक्शन कैंसिल किया गया था। एक सही सीन हुआ है। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ आई वॉज इन हॉस्टल। मेरे साथ जो रूममेट्स थी पहले उन्हें नहीं था पता कि मैं मिनॉरिटी से हूँ, लेकिन जब उन्हें ये पता चला दे सेड कि हम अनम के साथ नहीं रहेंगे। इट केम टू मी एंड सेड कि आपकी कम्युनिटी में भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ तक आते हैं, ये करते हैं। एट दैट टाइम आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि अच्छा ऐसा होता है। दैट टाइम वॉज रियली पेनफुल फॉर मी। We conducted an interview of a friend of ours who was previously living in Germany. Even though she is not a religious minority in Pakistan, she shared with us valuable experiences regarding her life in Germany, where she was a part of a religious minority. Incidents as Ramadan, teachers in Germany would have issues. For example, they would say, it's not good for you, you're not allowed to do it, it's too hot, you're going to pass out, it disturbs you from your studies, etc. I'm in grade 4, I used to wear the hijab, and my teacher would make comments like, you should take it off.
it differs you from people. It makes you different. You're not going to fit in. She used to say that, and then my parents actually talked to her. There used to be this mosque next to my house. And when it was built, it was actually really nice. Everybody, I personally even thought my parents wanted to send me there. My parents even helped fund it. But eventually, after like a year from now, last year it turns out that they were like really bad people, and they weren't actually real Muslims. They would keep terrorists in their mosque, or people who like escaped from jail. They would have drugs in the mosque, which I feel like makes a really bad image on Islam. Since 2002, a drastic change in Sikh population is observed. From a recent search, Sikh population has dropped from 40,000 to now being only 8,000. The main reason behind this are the attacks and forceful conversions. On September 30th in Peshawar, a Sikh was killed inside his clinic. Moreover, a Sikh, Ranjeet Singh, who was a citizen of Malaysia, was murdered in KPK while he was on his way to his house after attending a wedding. Other forms of discrimination were also reported by Ranjeet Singh, like threatening calls. After all of this, he said, "I will be left with no other option but to leave Pakistan." Jizya tax was also imposed on the non-Muslims in 2007 by the Pakistani Taliban. Not only this, they even ruined their houses when they did not pay this tax. We went to the National Commission of Justice and Peace, an organization that works for the rights of minorities. We interviewed them to find out solutions to the problems faced by religious minorities in Pakistan. We also had a conversation with the project heads and find out what their organization was doing in order to safeguard the rights of minorities, along with their suggestions for the government to implement to give them rights. समहाउ इसमें जो सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है वो राइट्स की अवेयरनेस है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक लोगों को राइट्स की अवेयरनेस नहीं होगी दे कांट डिमांड देयर ड्यू राइट्स. तो समहाउ दे फील के कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं या कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी. अक्सर हमने देखा है कि एजुकेशन की फील्ड में कि उनको करिकुलम में या सम एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग में उस तरह से उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता, इंक्लूसिविटी में इंश्योर नहीं किया जाता. इसी तरह से आप जो जॉब कोटा है उसकी आप इम्प्लीमेंटेशन में जो है उनको फील होता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है सेकेंड क्लास या सेकेंड ग्रेड सिटीजन जो है समझा जाता है. हम 1985 से माइनॉरिटी राइट्स और इसके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम अवेयरनेस के अलावा जो लॉ और लेजिस्लेशन में जो चेंजेस, पॉलिसी में जो चेंजेस लेकर आने हैं उस पर काम कर रहे हैं. जो स्पेसिफिकली हम एविडेंस बेस्ड सिचुएशंस को और केसेस को देखते हुए हम रिसर्चेस करते हैं और फिर हम आगे उनको अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो लॉज जो वायलेट कर रहे होते हैं या जो हिंडर कर रहे होते हैं माइनॉरिटी राइट्स को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. मेरी भांजी ने आके कहा अपनी माँ को कि अम्मी मेरी बोतल, पानी वाली बोतल को क्या है. टीचर कहती है इसकी बोतल से नहीं पानी पीना, जिसकी मर्जी बोतल से पानी पियो. तो वो टीचर चली जाती है तो फिर सारे मेरी बोतल से पानी पीते, पता नहीं क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है. टीचर्स बच्चे नहीं करते. गवर्नमेंट के साथ इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आइसोलेशन में काम कभी भी नहीं किया जा सकता. ये उनको एक आप समझ लें कि मैसेज है कि जो माइनॉरिटीज़ का जो इश्यूज़ हैं या जो उनका एजेंडा है उनकी वेलफेयर का या डेवलपमेंट का, तो उसको भी एटलीस्ट जो है इंक्लूसिव रखें. बीइंग मेजॉरिटी हियर एंड while being a minority in the other countries, वो somehow they can relate to the situation. तो अगर वो अपने आप को किसी दूसरी कंट्री में माइनॉरिटी होने की हैसियत से वो अपने राइट्स मांगते हैं, तो दे शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन देयर ओन कंट्री एंड सेट एन एग्जाम्पल, ताकि जो चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं हो. और ये कि वो माइनॉरिटीज़ के और मेजॉरिटी को एक ही उसमें बैलेंस में देखें. Students from religious minorities should not be alienated in educational institutions.
Everyone should actively talk to them, be friends with them, and make them feel valued and heard in order to eliminate any and all boundaries between them. Parents should make a conscious effort to actively teach their children about the rights of minorities and how they should be treated equally and the same as everyone else. Alongside treating religious minorities equally ourselves and not participating in any discrimination against them, we should also make a conscious effort to stop everyone else who is mistreating them and stand up for their rights. मिनॉरिटीज़ को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने राइट के लिए खड़े हों, बोलें, एजुकेशन में आगे जाएं, दूसरों को बताएं कि पाकिस्तान बनते वक्त हमें ये राइट्स दिए गए थे। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया स्कूल और जॉब काउंसलिंग अगर केस वगैरह में बराबरी नहीं दी जाती तो उनको बराबरी दी जाए। All people are at the end are equal and we're all just humans. मज़ीद इस रिश्ते ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹੇ।